do you think कि when you are young in your career, like around आप जब आपका career start ही कर रहे हो, so at that point of time you should give more priority to your professional life? See, early years of your career, because you are in your mid 20s, the energy level is higher, which means you can be more productive and efficient, हाँ. right? So, in fact, working 12 hours is not a very smart deal when you are in your 20s. Typically say, I would say कि अभी I might be lesser efficient than what I was 10 years back. So जब मैं 22-23 साल का था तब आई वाज लाइक वेरी एफिशिएंट. मैं 1 घंटे में 4 चीज कर पाता था. अभी मैं 1 घंटे में 2 ही चीजें कर पाता हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स आई वांट टू डू देम परफेक्टली. आई हैव माय ओन थिंग्स दैट विल कीप ऑन डिस्ट्रैक्टिंग मी ऑल टुगेदर, जो उस टाइम पे नहीं था. सो आई थिंक तब और अब अगर आई वाज वर्किंग 8 hours when I was 22, and if I'm working 8 hours when I'm 32, uh, I would have been more productive when I was 22 year old in those 8 hours than what I am right now. You know, Hmm. so I think uh, being more productive in your 20s and working 16 hours is not going to help. It's more about being productive enough that you complete all your work, all your planning in those 8, 9, 10 hours maximum, and then have a good chunk of your non-work life as well. I think most of the people, and I think it's more to do with that we are also a developing country, so there are a lot of opportunities. Everyone wants to grab as many opportunities, but we need to understand that uh, your crucial personal time that you get to spend with people around you is also as important as your professional life, or your time that you're going to spend along with your colleagues. Your True. personal time is not going to come back. It's not like once you turn 35, you'll be like, अरे अभी मेरा प्रोफेशन सेट हो गया, अब मैं सिर्फ फैमिली के साथ टाइम निकालूंगा. वो नहीं होता है. या मैं फ्रेंड्स का टाइम निकालूंगा. बाय द टाइम यूर 35, योर फ्रेंड्स आर ऑल्सो बिजी इन देयर लाइफ. मेरा Hmm. व्हेन आई वाज 22 year old, मेरे प्लान्स ऐसे बनते थे फ्रेंड्स के साथ. तुम्हारा भी ऐसा, यू मैसेज अ हाँ. फ्रेंड, यू आर लाइक चलो गोवा, पीपल आर लाइक चलो गोवा. हाँ. मेरा ऐसा नहीं बनता. मेरा नवंबर का गोवा का प्लान अभी बन रहा है. And people are like right now going to apply for their leaves so that they get 7 days ka leave back. So you need to understand that what was going to happen in your social life in 20s will not happen in your 30s. So you can't say after 20s ka social or personal life I will compromise it to suddenly become more richer or a more successful career person, and at 30s I will then suddenly become more personal oriented person. It doesn't happen. So someone who's balanced, who's learned the art of balancing, will always lead that kind of life for next 50 years. Someone हाँ. who's never learned that art will always struggle. वो 20s में they'll be very प्रोफेशनल लाइफ ओरिएंटेड, 30s में they'll be very personal लाइफ ओरिएंटेड, 40s में वापस प्रोफेशनल में जाएंगे, 50s में वापस पर्सनल में जाएंगे. They'll just keep on dwindling Hopping. between both the things. So that is, I think, a thing that I learned. I tell that to every possible friend of mine. सबको बोलता हूँ यार, this time is not going to come back in your professional and personal. Make the most out of it both ways. Don't make most out of it just in a singular way. And of course, similarly, your third, which is your me time, which is the हाँ. time that you spend with yourself. So typically 20s में people cut that time. People are like कि 20s में मैं अपना सोशल लाइफ संभाल लेता हूँ, प्रोफेशनल लाइफ संभाल लेता हूँ, मेरे को मी टाइम की क्या जरूरत है. मी टाइम का भी उतना ही जरूरत है. थ्रू आउट योर लाइफ यू नीड दैट मी टाइम, पर्सनल टाइम, प्रोफेशनल टाइम इक्वली सॉर्टेड थ्रू आउट. Hmm. Hmm. True. ये So I 100%. had that balancing. I've been telling people, if you're listening to this podcast, please make sure that whatever your age is, if you have completed your graduation, your me time, your personal time, and your professional time needs to be properly defined. एक दूसरे को overlap करने से you won't become Ambani. You'll Hmm. not become very successful. In fact, and too much personal time spent करके you might not even become very social. Things will take their own course. But what you can make sure is that at least in your present you are fullest. Yeah. And I think this comes from a lot of young people trying to show कि मैंने ऐसे 22 पे मैंने 5 मिलियन बना लिए, या तो फिर मैंने इतना इतना बना लिए. लाइक लॉट ऑफ अस आर थिंकिंग लाइक कि मैं उस जगह पे किस तरीके से पहुंचूं. अगर वो बना रहा हाँ. है तो देन आई ऑल्सो वांट टू मेक दैट अमाउंट ऑफ मनी. एंड देन फिर उस लूप के अंदर वी फॉरगेट अबाउट दोज पर्सनल लाइव्स, आई The बिलीव. entire, मतलब, I think, like I said, we are a developing country, so somehow we have this belief that the more I work, the more successful I would be. The या. entire hustle economy is based on that, but that's not how it is. It's not at all true. The हम्म. more
time you invest doesn't mean that better you are doing. The more smart you are, the more smartly you can achieve same productivity without spending more time is what is going to make you successful. So the entire hustle culture is very otherwise. They are like 20s में बहुत hustle कर लो, 30s में मजे करने. It's the same logic जो हमारी मम्मी हमारे को स्कूल में बोलती थी, बेटा हाँ. 10 तक पढ़ लो फिर तो मजे ही है, 12 तक पढ़ लो फिर मजे ही है, कॉलेज पढ़ लो फिर मजे ही है. किसी के मजे नहीं हुए ना. एवरीवन रियलाइज्ड कॉलेज के लास्ट पे जाके कि अभी बॉस नाउ तो द चैलेंज इज स्टार्टिंग, अब तो फाइट शुरू हो रहा हम्म. है. एंड देन पीपल आर लाइक अभी बस 5 साल मेहनत कर लो फिर मजे है, अभी एक हम्म. स्टार्टअप कर लो, $10 million बना लो फिर मजे है. इट डजेंट हैपन दैट वे. Yeah, true. I always thought the happiest people in my batch during my school were those people who were average performers. You know, उनको फेल होने का भी डर नहीं था, उनको सक्सीड करने के लिए घर पे कोई ये भी नहीं बोलता था अभी बस पढ़ लो थोड़े. उनके पेरेंट्स को पता था वो अपना काम निकाल लेंगे, आगे लाइफ में मूव करेंगे, एकदम बैलेंस चलते, ना वो फेल हो रहे हैं ना वो ओवर अचीव कर रहे हैं. एंड देन वो हम्म. कंसिस्टेंसीज वेयर लाइक दे विन बिग. और ये कॉलेज वाला थिंग तो आई ऑल्सो बिलीव दैट अ लॉट बिकॉज आई हैव एंजॉयड माई कॉलेज टाइम अ लॉट. और मैं जब मेरे कोई जूनियर मिलता है मुझे या तो फिर कोई कॉलेज में तब मुझे मिलता है दे आर टॉकिंग अबाउट की फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी मुझे ये करना है लाइक आई हैव दिस पेयर 4 hours और 5 hours ऑफ टाइम तो मुझे उसमें मैं ये कर लेता हूँ सो आई कैन अर्न मनी आउट ऑफ इट. मैंने बोला ठीक है तू कर तू फिगर आउट कर ले कि तुझे इतना रुपए कमाना है बस उसके बाद फिर तू करेगा कि एक महीने मुझे 50,000 60,000 तब उस उम्र में करना है. देन यू आर लूजिंग आउट ऑन अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पेंडिंग टाइम विथ योर फ्रेंड्स कि वो तेरे फ्रेंड्स एब्सोल्युटली. बना रहे फ्रेंड्स की चल आज आईपीएल बैठ के देखेंगे आज फाइनल है एंड दैट फन विल नेवर कम बैक. Absolutely, absolutely. तो Even after having all that money in your account, that fun is not going to come back. हाँ. The realization eventually for most people happens very late. People realize this by the time they turn 35. When you know that every door is closed, suddenly you are like, oh, now I want to meet my friends. Now I want to spend more time with them. But that phase has gone for most of the people, unfortunately. और इस बात से ना आई वाज आल्सो वेरी लाइक आई वाज स्ट्रगलिंग विद दिस लाइक फ्यू मंथ्स बैक वेयर आई वाज सीइंग सम अदर फ्रेंड्स ऑफ माइन कि जहाँ पे वो लोग दे आर पुटिंग मोर एंड मोर आवर्स इन देयर वर्क एंड आई एम लाइक कि मैं 5-6 घंटे काम कर रहा हूँ मेरे जो काम खत्म करना था वो कर हाँ, लिया. हाँ. अभी लाइक दे आर वर्किंग आई एम सिटिंग एट माई होम और कोई मिलने वाला मतलब फ्रेंड्स है फ्रेंड्स लोग काम कर रहे हैं वो नहीं मिल रहे. देन आई एम सडनली हैविंग दिस फोमो एंड आई थिंक लॉट ऑफ पीपल विल हैव दैट फोमो कि सारे लोग काम कर रहे हैं यार मैं काम नहीं कर रहा हूँ मैंने खत्म कर दिया काम तो फिर राइट किस राइट तरीके राइट, से सबको करो. होता है वो. हाँ, हाँ. एग्जैक्टली. आई थिंक एवरीवन गोस थ्रू दैट एट सम पॉइंट और द अदर. बट वही है, नॉट एवरीवन थिंक्स that हम्म. a healthy balance is what will keep you going longer. हाँ. हाँ. Again, और it boils down to the same um, जो हमारे को पहले वो टर्टल एंड रैबिट का स्टोरी सुनाते थे ना, हाँ. that the slow and steady wins the race. You need to be हम्म. that slow and steady one. You don't need to be the rabbit. Most of the people are trying to become the rabbit in हम्म. that story. Everyone thinks that, hey, I am the smarter one. So if I become the faster one, I will probably achieve my goal even more, हम्म. faster than how a turtle would. But eventually, the turtle always wins. We need to just realize that in the turtle and rabbit story, there was a reason it was being told to you when you were 2 year old. It was the reason it was told to you again when you were 5 year old, and it was the reason they told you in the MBA college the same thing. That be the turtle, don't try to be the rabbit. ट्रू 100%.